been having very busy days lately. I hate my work. I don't like it either. It's very boring. आगे से मुझे जाना नहीं है क्योंकि वो रास्ता बड़ा खराब सा है. I don't know इसके ऊपर कि चंडीगढ़ पुलिस मेरा चालान काटेगी. भाई मेरा फोन क्या हो रहा है मेरे साथ? Oopsie. We'll start again. Wait. Hello, my cutie patooties. क्योंकि पहली बार मैं कैमरा गिर गया था. But again we are here. So welcome back to my YouTube channel again. क्या cringe line बोल रही हूँ. I feel so dumb. Like literally भाई. So I have been having very busy days lately. पता नहीं क्यों. I am working as if my life depends on it, and I'm not liking it. I'm not enjoying it because I don't enjoy my work. I hate my work. I hate what I do for living. Like hate is such a big word, but I don't like it either. It's very boring. It's very exhausting. It's very annoying. So anyways, leave it. Per se, I can't sleep. I can sleep, and I sleep a lot. But the problem is, I don't feel I had enough sleep. What? Does it make sense? It does, obviously, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं रात को भी कोई नाइट शिफ्ट कर रही हूँ and feels very horrifying कि भाई like when I go to sleep and I am not conscious, my body is still working. Damn. Okay. Appreciation later. So I was talking about me working. हाँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है आजकल कि मैं रात को भी ना सोने के बाद काम कर रही हूँ and then when I wake up I am already tired. Either that or I am possessed by some demon and I am working in the night and I don't even know about it, and that's why I am so fucking tired every day because it's just Wednesday. And I feel like my body is completely burnt out and everything. Is there a ghost in my house? It's weird, but it might be a possibility, right? How tired I feel? My brain doesn't work. My brain is not braining after 3 p.m. By legit, after lunch, I would be like completely exhausted and everything. I'm just working on some brain cells that I have left with at that time. और बस उसी भरोसे में कर रही हूँ. I don't know why it's becoming so exhausted. I fumble with words sometimes that because I am tired. और ऊपर से फिर मेरे अंदर जिम जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है. So story time. So the other day, my roommate was like, I couldn't sleep last night because, hello. So yeah. She was like, भाई मेरे को रात को नींद नहीं आई because at the time at 3 or 4 in the morning I felt like किसी ने मेरी ब्लैंकेट खींच के मेरे को उठाने की कोशिश की है and bro what. तो बोलती हाँ मतलब इस टाइप की फीलिंग आ रही थी जैसे किसी ने मेरे को ब्लैंकेट खींचा है जोर से और उठाने की कोशिश कर रहा है and फिर मैं उठी and I was feeling like कि कोई है कमरे में और मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था. लाइक ओके देन आई वाज लाइक हाँ भाई एक्चुअली 3 से 4 बजे के टाइम पे लोग बोल देते हैं यार भूतों का टाइम होता है तो जनरली उस टाइम पे अगर तुम्हारी आंखें खुल रही हैं सो माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज सम घोस्टली फिगर इन योर रूम. बोलती हाँ मैं सोच रही थी तेरे को बुला लूँ बट उसकी फट गई उसके बाद. बट या जॉक्स अपार्ट इट डज हैपन. आई डू बिलीव इन घोस्ट सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. ऊपर से उसके बाद ना मतलब दिस इंस्टेंस हाँ सही बोल रही हूँ has happened with my mom as well. तो she used to be like यार मेरे को एक दिन बता रही थी कि ना मेरे रोज़ ना ऐसे 3 मिनट पे 7 या 13 मिनट के आसपास ना रोज़ आँखें खुल रही थी. मतलब फॉर अ वीक इट वॉज हैपनिंग विद हर. तो आई वाज लाइक भाई क्यों. फिर उन्होंने वो शिरडी वाले साईं बाबा जो है उनकी भभू टाइप रखने शुरू किया अंडर हर पिलो. देन शी वाज लाइक ओके नाउ आई कैन स्लीप पीसफुली.
बट या दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. आई डोंट नो, मतलब मैं साइंटिफिकली भी पढ़ा है कि देयर इज दिस रैम साइकिल एंड एवरीथिंग, कि वो 3 घंटे का ब्रेक होता है उस टाइम पे मोस्टली. बट इट्स नॉट दैट ओनली. आई डू बिलीव देयर कुड बी सम demonic entity making me overwork at night as well. That's why I'm so freaking tired every day. And then there is my boss, जो भूत से कम तो नहीं है. So yeah, he is the male version of Chudel. Oh, if he sees it, I'll be fired the next day. इसको कट कर देंगे हम. मेरी आँख में कुछ चला गया. So maybe I do believe in ghosts. ऊपर से फिर मेरा जिम जाने का मन नहीं कर रहा है. लाइक फॉर द लास्ट 2-3 days, मतलब लास्ट वीक एज वेल, मैं मतलब इस वक्त जैसे घर पहुंच रही हूँ उसके बाद आई हैव टू टेक अ नैप और एन आवर और समथिंग जस्ट सो दैट आई कैन स्टार्ट वर्किंग अगेन. तो मतलब अगर मैं 6:30 बजे के आसपास पहुंच रही हूँ तो मैं डेली 1 घंटे का नैप ले रही हूँ, 1-1.5 घंटे सो रही हूँ कि भाई आई कैन गो एंड वर्क आउट. बिकॉज उससे पहले तो मेरे अंदर एनर्जी नहीं है बाय एनी मीन्स. I can chug like 5 cans of Red Bull and I would still feel the same. And it feels so annoying because for me, I desperately want to go and work out, but my body is saying no, stay at home. And at midnight, at 12:30, when I have some kind of energy, I feel so bad about it. Like, why did I do it? Idhar se chalenge. I'll just get some mangoes. I'm paglu. Yeah, so that's been happening. और तो क्या है. बट हाँ, मैं अभी ना बैठ के ऐसे लास्ट के आधे घंटे, बिकॉज आई हैड नो एनर्जी टू वर्क, सो आई वाज जस्ट राइटिंग व्हाट अदर थिंग्स आई नीड टू वर्क ऑन. एंड ब्रो, for the first time in a very long time, my list was like above 10 things that was supposed to be done on priority, but they are not done yet. I haven't even started working on them yet, and I feel so bad about it because I don't like to be this person who doesn't finish her work on time, but I am becoming that person because I have a lot on my plate. It's a freaking buffet of work right now. Also, I have been, since I am a mechanical engineer, everyone in my office, like 99% audience, what the fuck is the audience? Employees in my office are male, okay, obviously. हम इसको बाद में ख़त्म करेंगे क्योंकि मेरे को मैंगोस खरीदने हैं. So I feel stuck. मेरे को यहाँ से U-turn लेना है, बट ये रूट U-turn लेने के लिए तो नहीं है रूट. आई एम नॉट सपोज टू टेक U-turn, बट आगे से मुझे जाना नहीं है क्योंकि वो रास्ता बड़ा ख़राब सा है अंडर दैट ब्रिज. सो नाउ आई एम थिंकिंग व्हाट शुड आई डू. चैट, शुड वी टेक द रिस्क? जा सकते हैं यार, इतना भी कुछ बुरा तो है नहीं. आई विल डू इट. आई डोंट नो, एक तो इसका ना भयंकर मुझे समझ ही नहीं आता है कई बार. व्हाट आर पीपल वाचिंग, व्हाट आर पीपल लुकिंग एट समटाइम्स. एनीवेज, विल जस्ट टेक अ U-turn. व्हाट एल्स आई कैन से. कौन सी कहानी सुना रही थी? ओके, सॉरी. या डन. आई डोंट नो इसके ऊपर क्या चंडीगढ़ पुलिस मेरा चालान काटेगी, ये क्या करेगी, बट अब तो मैं निकल गई हूँ. भाई मेरा फ़ोन. Did I just accidentally put my phone without realizing in my bag? Where is my phone? बस तो यहीं गई रहा है. भाई कहाँ है? क्या हो रहा है मेरे साथ? See, this is also happening with me lately. Oh, wow. Oh, seriously? Bro, I need sleep. I just kept my phone like this. और मैं चल पड़ी थी भाई. Oh my. I think I can finally say I am not sane right now, and I do need a break because this is not some sane activity. This is not an activity a sane person would do. क्या बोल रही हूँ मैं भाई. मुझे घर जाना है. मुझे अपने घर जाना है. मुझे घर जाना है और मुझे बाहर नहीं निकलना. आई नीड हाइबरनेशन एट दिस पॉइंट. ब्रो, अब मैं लेजिट वहाँ से आम की दुकान पे से फ़ोन पीछे ऐसे ही सीट पे छोड़ के चल रही हूँ. लाइक सेम चीज़ हैपेंड विद मी यस्टरडे. अच्छा, नॉट सेम चीज़, सेम थिंग, नॉट सेम थिंग. मतलब कल क्या हुआ, मैं जिम के लिए जा रही थी. सो मस्त अपना बैग संभाल लिया, ये सारी चीज़ें ली, एंड नीचे आई, बाइक के पास खड़ी हूँ, एंड आई एम लाइक चाबी लाना भूल गई.
फिर मैं चाबी लेने गई, विच इज़ ओके। एक बार को तुम्हें लगेगा कि हाँ ठीक है, इट्स नॉट जस्ट एग्जॉशन, इट्स जस्ट हाँ ठीक है, मैं भी भूल गई, बट मैं ऐसी चीज़ें भूलती नहीं हूँ जनरली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। फिर उसके बाद मैं जिम पहुंची हूँ एंड आई हैड सम कॉफ़ी इन इट, आई पुट सम कॉफ़ी, पानी भर रही हूँ, देयर इज दिस मेटल थिंगी, स्प्रिंग टाइप होता है ना उसके अंदर, बॉटल इनसाइड दैट बॉटल ऑफ योर्स, क्या बोलते हैं उसको, जो जिम वाली बोतल होती है। एंड आई वॉज जस्ट मतलब मैंने पानी भरा है उसके लिए उसमें, और मैं वो ढूंढ रही हूँ, भयंकर मैं स्प्रिंग वहीं पे किचन में छोड़ के आ गई। और जब मैं किचन में ये सामान मतलब कॉफ़ी भर रही थी, आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट कि भाई ये लेके जाना है, भूलना मत, एंड आई टोटली फॉरगॉट इट। सो जस्ट FYI to people that I am not sane right now, I think, and at this point I should definitely consider having a hibernation, getting into hibernation, because I am a threat to the society and to me as well. Yeah, and what else was I talking about? Yeah, the fragile male ego. Yeah, so what happened? हाँ, तो मैं just because I'm a mechanical engineer and I work in a core mechanical company, so 99% of employees in my office are male. So if you think that I would be having any female interaction in my office, there is none. Okay, zero, completely empty, nothing. And the only other female who is a female in my office is an HR, and then the CEO. And she does not live in India, she's not Indian, so yeah, we'll just skip that part for now. And yeah, so we were technically I am all alone in my office most of the time, and guys just don't sometimes. Mechanical engineer, typical mechanical engineers, they don't feel comfortable to talk to me and whatever. So yesterday what happened, there was this discussion happening about some stuff, and I was giving some inputs about some certain things which I thought is necessary, and this guy was interrupting me again and again and again, and I was like, okay fine, won't say anything, though I wanted to say, so let me finish, I am not a fucking wife that you won't let me finish, which would have been very savage moment. But for corporate it would have been very go to the HR moment. And then out of pettiness I did the same thing with him when he was talking. I just interrupted him once and he got so annoyed. He's like, let me finish. And I was like, not like this, but yeah, obviously in my mind I was thinking, what the fuck. But then I was like, okay, Ria, fine, just be a bigger person, because I am the youngest in my office, so I have to be the biggest person, because these guys, these men over 40 have a fragile male ego, dude, I tell you. Like, I kid you not, whenever I go to them, like, this is the stuff that is hindering my thing that I have to complete, so just work on it. Oh, that is a pink pigeon, whatever. Yeah, so they would be like, this is the process and everything. They would always hinder with the thing I want to work, and sometimes I have to yell at them, which they obviously won't like who like, तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से कौन ही सुनना पसंद करेगा. And even I don't like to yell at people. I do yell at people, but then at the end I would be the one who will be feeling bad about it, क्योंकि भाई I will be feeling like यार अपने बाप की उम्र के किसी को डांट दिया, and I don't like that feeling. As simple as that. So yeah, what was happening? This happened, and earlier he used to be very cheery with me, like yeah, you are very fine and everything, like not like that, but he was like, yeah, you ride bike, you look very cool and everything. Like, thank you. And we have never worked before that, and there was the second interaction of us in 1 week. And bro, let me tell you, he got so annoyed, like how dare I asking him questions. That today when I saw him, I said, good morning, and he was like legit, just a note, just a fucking note. And he was like, princess is pissed, guys, princess is pissed. So yeah, I have been tingling their fragile male egos for fun lately.
not like for fun. I just want my work to be done, and I don't like to bother people unnecessarily. But if you are not helping me finish my work, which is your responsibility as well, so yeah, bring it on. But it looks very freaking petty from their point of view, that they have to fight a 24-year-old being 45-year-old, I guess. Yeah, so this was my pettiness story for the day. Now I have reached home. I'll see what I do, if I will have the energy to go to the gym or not. And I'll see you guys in the next video. Bye.